Here we see the second semi-final. Toss won by Cowboys Bali, and on the crease, Punaji. In the air, away from the reach, or will be taken. Catch dropped. Oh my God, catch has been dropped, and that to ball goes for boundary. Whose catch you have dropped? Punaji, one of the best players of Goa, not only in Goa but also showcasing talent outside Goa, in Karnataka, Maharashtra, making name and fame for the state, has been dropped off the very first ball. He was all the while in a position. Last man to drop this catch is Navdeep. This time he goes for the shot in the leg side, gets a single. This cannot drop a catch of Punaji. Well, if he gets going, then it will be payback time for you as a team. But so far, I have seen this team has bowled very well, defended very low totals. Kapil. DHIRAJ 11, ASSONORA. This time in the air. This should be easy catch. So wicket going down. तुमका रिक्वेस्ट असा DHIRAJ 11 ASSONORA मातशे डगआउटा बसात भायर बसनाका. Everyone, all the players. This is a discipline that has to be followed by everyone. All the other teams have followed in this tournament. Request तुमका वता मातशे डगआउटांतल्यान मॅच पळया आनी ग्राउंडार भायर थंय वचनाकात. South Goa. This time, a wicket has been taken. Good catch. Samir goes back without troubling the score as golden duck from him, and in comes Vivek. So good strike. Kapil striking out the very first over. Request करता man of the match awardee Prahlad. Lovely ball. Prahlad upar हाका man of the match award मेळिल्ले first semi-final. मागता प्रल्हाद उपर हाणें हांगा येवचें आनी ताजे man of the match prize collect करचें from social worker सिद्धेश बाब भिसे. सिद्धेश बाब भिसे हाणें येवचें आनी हें प्रायज जें आसा तें प्रल्हाद उपर हाका दिवचें. प्रल्हाद मातसो यो आनी तुजें man of the match prize collect कर. And well, very good bowling here from Kapil. He has been consistent. He has been quite good for this side right from the start. We have to wait for umpire's signal. Says that's not wide because batsman has shuffled too much across. And that's the guiding line for the umpires for signaling wide also shuffles. So wonderful umpiring here from Nilesh Naik. And with that, first over comes to an end. The score is 5 for the loss of 1.
This time, Punaji, not a convincing shot. The second over here, bowled for Cowboys by Rupesh. I'll already mention, if you have 5 good bowlers who can defend a total posted by your batsman, that side is definitely a good side, and that's the reason why Sanwade boys entered into the finals. The only man who batted for them throughout was Prahlad Upar. Consistent performance in every match, and finally the bowlers comes and defends even the low totals that has been posted. Not a great batting side, but a strong bowling unit of Sanwade boys. Here also, Cowboys they have got good batting depth, but also more strong strength, you can say, is bowling department. This was a loose ball. This is in the air and catch straight in the hands. Punaji misses a full toss ball. It went flat and not crossing the distance as well. What a wicket. If it was just 2-3 meters away from the fielder, it was flat. No chance was there, but it went straight in the hands. Fielders didn't have to move an inch. What a start. They got rid of both the openers in the second over itself. Rupesh not even conceding a single run so far in his first over, and also took the most important wicket in this contest. In comes Pritham. In comes Pritham to give company to Vivek. This time very nicely played. No chance of a run. Chance of a run out at the non-strikers, and oh, the throw was a little bit wavered. Rusty throw. If it was straight in the hands, then this could have been another wicket. Well, DHIRAJ 11 ASSONORA are in a spot of bother at the moment. They are not getting the runs, and bowling is also tight. Fielders are taking the catches. Just the one catch that was dropped, but that has not costed them much. Of Navdeep. Navdeep also will feel a huge sigh of relief seeing the back of Punaji. This is wide, signaled by umpire Sadgiri Naik. There was no shuffle from the batsman. That's the reason why wide signaled by umpire. That's a lovely shot, crisp looking shot. The ball has been saved inside, and they go for the second run. New ball. This is a new tennis ball. It doesn't go that much fast when the top leather just goes off. So far, it's just a second over. That's the reason why ball is quite new, and it doesn't run across fast. Once it is in the 4th or 5th over, it goes much quickly in the outfield. With these 2 runs, score moves on to 9. Once again, a beautiful bowling, quick ball. Once again, another single. They are taking the scoreboard, ticking along with those singles only. Another economical and wicket-taking over comes to an end from the bowler Rupesh. After 2, the score is 10 for 2.
This time, once again, Kapil coming into the bowling attack. He bowls those off cutters for the left-handed as it goes away from them, and he bowls leg spinners for the right-handers. Meanwhile, once again, the righty in the block hole, just a single. Whereas Burpuri Nama, Dithle Star Boys organizers side, lots of spot prizes, some quizzes as well. जर फिल्डर भायर आसात नाल्यार स्पेक्टेटर्स भायर आसात आनी कॅच धरली स्पेशली फॉर स्पेक्टेटर्स जाल्यार तांकांय बी एक स्पॉट प्रायज आसतले. ह्यो सगळ्यो जी इनामां आसा ते फायनलीक वेळार आसतले. म्हणल्यार फायनल आसतली ती 5 ओव्हरीची 2 इनिंग्स अशे तरेन फायनल खेळटले. सो तुमकां रिक्वेस्ट भरपूर जाण येयात आनी खुबशीं इनामां तुमकां हांगा दवरल्या जे स्टार बॉयज पेटयतले. So again, very nicely played a flick straight to the man in the deep square leg. Only a single. So far, this is very good here from the bowlers. No loose delivery, nothing. And on top of that, since 2 wickets have fallen down, batsmen are not playing their aggressive natural game. This is an 8-over format. If you lose wicket early in the 3-4 overs, the match is closed there and there. This time way too outside, wide signal by umpire. He saw that batsman was trying to shuffle, but wide signal. Score moves on to 13 with that extra. This is in the air. This might be one more catch. Not timed it very well, and catch taken. Third wicket going down. He went after Kapil. Kapil is not an easy customer to go after. Second wicket for him. Third wicket for the team. Sid Vanekar comes in at number 5 position, 3 down. Very nicely played Pritham. Now all rest on Pritham and Sid to get into a partnership, not giving early wickets. That's the reason why I praise Sounded boys at this stage. If you look carefully, then Harish and Prahlad Upar had played off these 3 overs, not a great total being posted somewhere around 25. And then when the ball gets little bit older, they went after the bowling. In fact, Prahlad got more sixes in the 7th and 8th over. That's a good smart piece of batting there. They knew that they didn't have that much of depth, and they go for the second. This is poor stuff here from the bowler. The ball did not gather in his hands. So you cannot blame him as such. Just happens as a part of the game, slippery maybe. And with that, once again, a wicket taking and economical over comes to an end. That's the 3rd over for the team. After 3, the score is only 16 for the loss of 3.
So again, shot in the leg side. Good bowling here, good decent bowling from most of the bowlers, even a new bowler who is come on to bowl, Kavish. Also has a different sort of caliber as a bowler. He also mixes up with those little bit cutters and medium pace bowling. Sid Wernicke. Once again in the air, will it be taken? Fielder underneath and drops the catch. A chance given here to Sid. Second catch being dropped. First one not hurted. Then Punaji went early and Sid stays. So Pritham will be on strike. He goes for that shot. Almost a half sweep and a flick shot here from Pritham. He is playing the waiting game. He wants him to stay till the 7th or 8th over where he can get the flurry of boundaries or sixes. This time he goes for the big one. He times it well and gets the first six. That's the first big one here. First jubilation. First big strike from the bat of Sid. Started to fly across for sixes. In goes the second big shot. Will it be taken? Fielder tries hard but tries in vain. Now a momentum here in this DHIRAJ 11 ASSONORA side. Kavish has been taken apart in the last two balls. 1-6 and 1-4 for Sid Wernicke. Dhoni, okay. 2 sixes in 2 balls. Can it be hat-trick of sixes? Definite momentum in towards this side. DHIRAJ 11 ASSONORA. So this is how it pains. Catch dropped and the same batsman comes and hits 2 sixes. That is the reason why coaches tell you or the experts tell you don't drop catches. Now a change in the field movement. They got 4 men back on the leg side. He goes for the switch hit. Chance of a run out, but Kavish doesn't throw the ball. So finally, 1 over that has gone in favor of the batting side. Sid Wernicke getting 2 sixes in that over, getting some momentum towards these innings. And after completion of 4, the halfway mark of the innings score is 32 for the loss of 3. And I will take a break in the commentary. I will hand over the mic to Ashok Naik sir for further updates in Hindi. के टीम 32 रन 4 ओवर समाप्त। और काउबॉयज की हम जब जब चर्चा करते हैं फील्डिंग की, बहुत अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाती है। आज कैच छूटा और सामने सिद्ध वेर्नेकर के बल्लेबाजी में 2 लाजवाब बड़े शॉट छक्के। गेंदबाजी में परिवर्तन, नवदीप बॉलिंग मार्ग पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रीतम सिंगल के साथ बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी।
फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लेग स्टंप पर, बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट इस बार ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, सिद्धवेर ने करके बल्ले से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। जो मौका मिला उस मौके को बिल्कुल फायदा उठाते हुए, यही तो क्रिकेट है। 2 छक्के, तीसरा बड़ा शॉट, एक चौका और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42 पर। सेमीफाइनल का दूसरा मैच, सावर्डे बॉयज क्रिकेट टीम अंतिम फेरे में प्रवेश कर चुकी है। कौन उनके साथ मुकाबला करेगा ये तय करेगा ये फैसला। ऑप्टम से बाहर इस बार, विकेट कीपर के पीछे गेंद चली गई, फाइन लेग पर फील्डर आते, थर्ड मैन से गेंद को फील्ड करते, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन, यानी टोटल मिले 2 रन अतिरिक्त स्कोर के खाते में। हमारे और एक बिल्कुल करीबी दोस्त कमेंटेटर सागर गोसावी का आगमन होता हुआ। सागर सर, आपका स्वागत। फुल टॉस गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट और एक चौका, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई 4 रन के लिए। प्रीतम के बल्ले से पहला चौका, 4 रन के लिए। 48। धीरज 11 अस्सोनोरा शुरू में बिल्कुल रनों के लिए तरस रही थी, संघर्ष कर रही थी, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन काउबॉयज बाल्डी ने मौका दिया सिद्ध वेर्नेकर को और सिद्ध ने लगाए 3 छक्के और 1 चौका अब तक बल्लेबाजी में। और इस बार देखना होगा, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूटा। स्वप्नेश, आज बिल्कुल सुबह का मैच सेमीफाइनल का देखा, जो कैच छूटे रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम की ओर से वो महंगे साबित हुए, 2-3 कैच। और काउबॉयज बाल्डी की ताकत सबसे ज्यादा वो फील्डिंग है, लेकिन आज कहीं न कहीं बिल्कुल नजर लग चुकी है मैदान पर, कैच छूटते जा रहे हैं मैदान पर। तीसरा कैच, सामने सिद्ध वेर्नेकर। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, नवदीप बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, सिद्ध वेर्नेकर। धीरज 11 अस्सोनोरा क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए। $55 टोटल और सिद्ध के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का। हमारे नूर भाई बिल्कुल जो कि गेंद को ढूंढ कर ला रहे हैं। नूर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से। बिल्कुल नवदीप थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में 2 चौके 2 छक्के लगते हुए बल्लेबाजी में, और सामने एक बार फिर से सिद्ध वेर्नेकर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट मैदान पर। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर सिंगल बना स्कोर में, और इस 1 रन के साथ से स्कोर हो चुका है 56 रन।
बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। शायद शुरू शुरू में अगर पिछले 2 साल की बात मैं करूंगा, 2-3 साल की, सिद्ध वेर्णेकर को उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता था बल्लेबाजी में। 7वें 8वें नंबर पर जो कि बल्लेबाजी को मौका मिलता था। लेकिन हाल ही में बिल्कुल कई मैचों में मैंने देखा है, कप्तान ने, टीम मैनेजर ने, आपकी टीम ने उनको थोड़ा सा आगे प्रमोट किया है। और मैं तो कहूँगा बिल्कुल खरे उतरे। मौका जरूर मिला, लेकिन मौके के बाद चौका लगाया सिद्ध वेर्णेकर ने। अपने टीम को लगभग संकट में थी धीरज 11 असनोडा क्रिकेट टीम। शुरू में पुनाजी कलंगुटकर बहुत सस्ते में लौटे थे। आने वाली बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो रोहन सालगांवकर मैदान में खेमे में जरूर शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कि आगे लेना जानी चाहिए था वो लेकर गए सिद्ध वेर्णेकर। 5 ओवर बैटिंग पावर प्ले का ओवर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जो हमें जानकारी देते हुए हमारे स्कोरर। 9 गेंदों में 32 रन, 4 छक्के 1 चौका उनके बल्लेबाजी में। सामने 1 चौका प्रीतम। शुरू में पुनाजी कलंगुटकर 5 पर, समीर 0 पर, विवेक आउट हुए 4 पर। और आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। क्या 90 का टोटल फिर से सामने काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम के सामने। लेकिन आज फील्डिंग में बिल्कुल जो कि खराब फील्डिंग, 3 कैच और वो बिल्कुल महंगे साबित हो रहे मैदान पर। सामने बॉलिंग में परिवर्तन। 6ठे ओवर की शुरुआत और स्वप्नेश गेंदबाजी पर। प्रीतम नॉन स्ट्राइकर इन पर। बैटिंग पावर प्ले का ओवर। नीलेश नाइक सर और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर। कड़ी धूप, सूरज माथे पर। दोपहर के समय में मुकाबला लगभग ये दोनों टीमों के बीच में सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। इस बार बल्ला छूटा एक हाथ से। खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर सफल रहे थे, लेकिन जिस शॉट के लिए उनको चाहते थे वो नहीं लगा। मिड विकेट से आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 57 रन टोटल 3 विकेट पर। 57 लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही बढ़िया शॉट, फ्लिक किया खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। गेंद चली गई प्रीतम के बल्ले से। पहला बड़ा शॉट 6 रन के लिए।63 रन 3 विकेट पर। बिल्कुल ठीक ठाक। धीरज 11 असनोडा क्रिकेट टीम के। इस बार बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। उतनी ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा प्रीतम को। 64 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर। सामने सिद्ध वेर्णेकर सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, हल्का सा अपील अंपायर की और, लेकिन बिल्कुल विकेट कीपर की कोई हलचल नहीं तो मामला बिल्कुल स्पष्ट था, साफ था। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। बड़ी देर के बाद एक थोड़ा सा बिट जरूर हुए सिद्ध वेर्णेकर स्ट्राइक एंड पर। स्वप्नेश अपने बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक छोटा रनअप 8-10 कदमों का। अच्छी गेंद, फिर से डॉट गेंद। अगर वापसी करने काउबॉयज बाल्डी को, मैं तो कहूंगा आपको अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग और विकेट लेने पड़ेंगे। फिर से मैच में कमबैक होगा, क्योंकि 80 के आगे निकलेंगे तो बाद में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा इस मैदान पर सेमीफाइनल में बल्लेबाजों को। बेहतरीन शॉट इस बार ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर। फील्डर 1 रन, क्या दूसरे के लिए निकलेंगे? बहुत ही सुंदर थ्रो, लेकिन उतनी ही शानदार दौड़ विकेटों के बीच में और इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 66 रन। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 6 ओवर का। आने वाले आखिरी 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। 66 लॉस ऑफ 3 विकेट। डीजे
सातवें ओवर की शुरुआत पिछले मैच की थोड़ी सी बात की जाए, अंतिम 2 ओवर में 47 रन बनाए थे सावड़े बॉयज क्रिकेट टीम ने, और खास करके आखिरी ओवर में 26 रन बने थे। वो कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के लिए। बड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। 72 रन टोटल स्कोर। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, अपने फॉलो थ्रो में गेंद थोड़ी सी दूर निकली। 1 रन, क्या दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा फील्ड होती हुई गेंद, 1 रन मिल गया स्कोर में। 22 का इशारा अंपायर का। एक सिंगल के साथ 73 पर बड़ा आगे स्कोर 73, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक अच्छी साझेदारी, तीसरा विकेट एक नाजुक हाल में थी बिल्कुल। धीरज 11, 13 रन था स्कोर बोर्ड पर, और जब तीसरा विकेट गिर चुका था तब बिल्कुल संकट में थी धीरज 11, लेकिन वहीं से सिद्ध वेरनेकर मैदान पर आ गए और पूरे छा गए। ऑफ स्टंप पर इस बार देखना होगा विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी, स्लिप पर फील्डर। एक सिंगल बना स्कोर में। 22 का इशारा अंपायर का। सर नीलेश नाइक, उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक, और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 7वां ओवर रूपेश गेंदबाजी करते हुए, सामने प्रीतम। इस बार फिर से अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, यॉर्कर लेन की गेंदबाजी हो रही है। स्लॉग ओवर में जो गेंदबाजी होनी चाहिए काउबॉयज क्रिकेट टीम की ओर से, वो गेंदबाजी हो रही है। और मैं अगर कहूंगा कि आखिरी ओवर तक आपने एक बड़ा शॉट नहीं दिया तो बिल्कुल आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने स्कोर खड़ा हो चुका है धीरज 11 अस्सनोरा क्रिकेट टीम का। एक अच्छा स्कोर 74, 74 रन 3 विकेट पर। फुल टॉस गेंद, लेकिन तेज फुल टॉस, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस, कवर पर फील्डर 1 रन दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का मौका, प्रीतम वापस। एक शानदार साझेदारी, 62 रन के चौथे विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी मैदान पर। धीरज 11 अस्सनोरा, चौथा विकेट वापस डीजे। थैंक यू डीजे। 2 छक्के 1 चौका, एक शानदार इनिंग। 24 रन बनाए प्रीतम ने, लेकिन जब बिल्कुल डगमगा रही थी मैदान पर, 13 रन था स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट। पुनाजी कालंगोटकर आउट हो चुके थे, वहीं से बाहर निकल अपने टीम को। एक बड़ी साझेदारी चौथे विकेट के बीच में, और रोहन सालगांवकर ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल संकट मोचक पिछले मैच में, जो क्वार्टर फाइनल के मैच में 4 छक्के लगाए, लगभग मामला समाप्त हो चुका था धीरज 11 अस्सनोरा क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन वहीं पर रोहन सालगांवकर ने 4 लंबे शॉट लगाए, मैच को जिता दिया। साथ दिया उनका विवेक ने, और इस मैच में सिद्ध वेरनेकर सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक पर रोहन सालगांवकर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर रूपेश अगली गेंद लेकर। 7वां ओवर मैच का स्कोर हो चुका है 75, 75 रन 4 विकेट पर। आते आते ऑनसाइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर फील्डर सिंगल बना स्कोर में। एक रन अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर में 7वें ओवर की समाप्ति, और 7 ओवर के बाद टोटल स्कोर 76, लॉस ऑफ 4 विकेट डीजे।
अंतिम ओवर का खेल बाकी। क्या होगा टोटल? 85 का, 90 का। काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम के सामने रोहन सालगावकर स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार पर स्वप्नेश। इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल बना स्कोर में। अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो, सुंदर थ्रो। दूसरे रन के लिए सिद्ध वेर्णेकर को आना पड़ेगा, लेकिन तालियां होगी धीरज 11 की ओर से। सिद्ध वेर्णेकर बिल्कुल अपने टीम को संकट से बाहर निकाला। एक कैच छूटा काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम को, वो मौका बहुत महंगा साबित हुआ मैदान पर। 13 रन 3 विकेट पर, और वहीं से लेकर चौथे विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी। 75 रन 4 विकेट पर, और अब मात्र और एक सफलता, 5वां विकेट। 77 स्ट्राइक पर रोहन सालगावकर, और उनका साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अनिकेत। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अगर आखिरी 2 ओवर की बात की जाए, पिछले ओवर में रुपेश एक छक्का लगा, लेकिन उसके बाद बड़ा शॉट नहीं दिया रुपेश ने, और इस ओवर में स्वप्नेश शानदार शुरुआत करते हुए रनआउट के रूप में एक विकेट वापस निकला धीरज 11 अस्सोनोरा क्रिकेट टीम का। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेकिन थोड़ा सा अपना लाइन से भटके। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, और एक रन भी मिल गया और एक गेंद भी मिलेगी बल्लेबाज को। नौ स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज अनिकेत, स्ट्राइक एंड पर रोहन सालगावकर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, लगभग बाउंड्री लाइन पर। फुल टॉस गेंद हवा में, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, कैच को तब्दील करते हुए रोहन सालगावकर वापस। टीम को लगता हुआ और एक धक्का, 6ठा विकेट वापस डीजे। कप्तान मोर्चे पर नामदेव बाणावलीकर, तेज गेंदबाज, बल्लेबाजी, फील्डिंग, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। सामने अनिकेत, स्ट्राइक पर। आखिरी ओवर स्वप्नेश बॉलिंग मार पर। ऑप्टम से बाहर थोड़ी सी परेशानी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने। स्वप्नेश, वाइड बॉल का इशारा, एक रन मिल गया स्कोर में इस सिंगल के साथ। 79 टोटल स्कोर, 79 रन 6 विकेट पर। फुल टॉस गेंद अक्रॉस द लाइन खेला, ऑन साइड पर, कैच का मौका, कैच छूटा। आज काउबॉयज 4 कैच छोड़े, ये कम बहुत देखने को मिलता है। मैं जब जब काउबॉयज के सामने अगर होता हूँ कमेंट्री बॉक्स में, तो हमेशा उनकी फील्डिंग की तारीफ करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल काउबॉयज आप फील्डिंग में बिल्कुल जो कि आपका खराब प्रदर्शन है। शानदार इनिंग जो कि मैदान पर सिद्ध वेर्णेकर, 35 रन बनाए सिद्ध वेर्णेकर ने, बहुत ही शानदार इनिंग। फुल टॉस गेंद, सामने गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, एक रन मिलेगा जरूर स्कोर में। अच्छा थ्रो, सिंगल बना। अंतिम ओवर का खेल, स्वप्नेश बॉलिंग मार पर। सेमीफाइनल का मुकाबला, सावर्डे बॉयज फाइनल में कौन खेलेगा उनके साथ, ठीक 3 बजे फाइनल का 2-2 इनिंग का जो कि मैच होगा, और स्कोर हो चुका है 81। फुल टॉस गेंद, मिड विकेट पर बड़ा शॉट, और सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। तो इस बड़े शॉट के साथ मैच को समाप्त किया। टोटल 87 और टारगेट 88 का 35 रन बनाए सिद्ध वेर्णेकर ने, 24 रनों का साथ उनको देते हुए प्रीतम। और ये था लेकाजो का थोड़ा छोटा सा ब्रेक है जरूर,
और दूसरी इनिंग में आइए जुड़ जाते एक बार फिर सर हरीश काकोडकर के साथ उन्हीं की जुबानें।
We are going to see the run chase of 88 runs from Cowboys Bali. 87 being posted. We have seen 96 that was scored by Saturday Boys was a little bit difficult for. In comes Rohan Salgaonkar, played nicely, should get a boundary at least. Just landing a shot and gets a boundary. Good start here for Navdeep. This length is quite easy here for the batting caliber of Navdeep. This was a much better, slower off catcher. You can see the change of pace. Batsman also says, yes, the bowler has fooled me this time around. There's a class of Rohan Salgaonkar, one of the very good players, very good bowlers especially, and good batsman. Oh, this is class. This is sheer class. Is it going for 4 runs? Yes, it does. How good that shot was. Always lifted in the air. Everything was perfect. Well, you cannot blame the bowler over there for bowling a little bit fuller outside off stump. But if the batsman can play shots on both sides of the wickets, and if he's good on the offside, then it's difficult for the captain of the fielding side to set exact field, especially in the power play overs when you have only 2 options, 2 fielders set outside the inner ring. This is lovely bowling. What a great comeback. Once again, a leg cutter. He went for the shot, then later on saw that, yes, it is not in my slot, and great catch. Easy catch, in fact, but bowler has to be given the credit. This is Rohan Salgaonkar for you. Parts. Rupesh will be giving company to Chipa. Chipa has so far not faced a single ball. And that's a good comeback. That's the reason why we call him as one of the very good all-rounders, especially a bowling all-rounder. Will definitely bowl the 2 overs. And in spite of a batsman going after him, getting 6s or maybe boundaries, he still makes a strong comeback. His mindset is very aggressive. And he knows, yes, bowlers are made to be scored for runs, but not consistently. Sometimes odd, it's okay. Once again, quick ball against the left-hand Rupesh. In comes in the batting crease Chipa. Raju. Run chase of 87 runs depends upon 88 runs depends upon how you start well. For semi-finals, Rohit cricketers didn't start that well. While chasing, this is in the air. This should be easy catch, and Chipa also goes back. Rohan Salgaonkar strikes twice in this over. What a start given by him for DHIRAJ 11 ASSONORA.
So first over bowled successfully here by Rohan Salgaonkar, just gave away 9 runs and took 2 important wickets. Navdeep and Chipa both back in the pavilion. In comes the left-hander Rupesh. Should be wide, way to outside. Namdev is bowling his first over, captain of the side. Oh, that's a good ball. What a cracker of a delivery. And his out signal, batsman knew that he was out. And a good bowling attack of DHIRAJ 11 ASSONORA is making this comeback possible. 3 wickets lost in the very second over. Clean out, clean out. बिंदिया चूड़ी सॉन्ग्स लायता डीजे मोगान पडला. Cowboys Bali are in trouble. Second over they are losing 3 wickets and that to top 3 order batsmen. And at the same stage DHIRAJ 11 ASSONORA were also 13 for 3. Once again we have to wait for umpire's signal. That was a good short ball, targeting his body, going close towards their shoulder height. 1 per the over signaled by umpire, leg umpire. Yes, it was definitely 1 per over, just between the head and the shoulder. So if the ball goes in that area, it is 1 per the over signaled by umpire. This is in the air. This might be a catch. Who is going to take? And Punaji takes an easy catch. Cowboys Bali are falling apart in just the second over. 4th wicket going down. ज्यांना फायनल येतली त्यांना भरपूरशी इनामां भेटली वतली. खूपशी स्पॉट कॅच धरली स्पेक्टेटरान जाल्यार ताकाय बी इनाम आसतलें. हे फक्त फायनली वेळार. फायनल आसतली 5 ओव्हरीची 2 इनिंग्स. Thirteen for 4. 13 for 4. 13 for 4. 10 for 4. 10 for 4. At this stage, 13 for 3 where DHIRAJ 11 ASSONORA. But while chasing, you cannot lose too many wickets too early. This time, once again, very well bowled here by Namdev. Bowling short of good length, hitting the deck hard, making the ball to rise up. Now I guess the bowlers will pile up more pressure and Punaji will definitely set his field to pile more pressure on the batting side. You can see the field. Most of the fielders are on the offside. In fact, 6. Only 3 fielders on the leg side. This is a fantastic, aggressive captaincy, on-field captaincy from Punaji. You can see the short ball. And they know the strengths and weaknesses of each player.
You know where the batsman is going to play, what are his strengths, weaknesses. Nowadays, only municipality panchayat level tournaments are being organized all across Goa, so they play against each other, know very well. And that's the reason why change of field here for Rajesh. You can see where they are bowling. Rajesh is also very smart. He knows he cannot give a wicket at this stage. That's the problem with this run chase. Once you lose early wickets, you are always under pressure, whoever comes new onto the crease. After completion of 2 overs, the score is 12 for the loss of 4. Score moves on to 12. And third over. So Rohan Salgaonkar, he's continuing with his bowling as 3 bowlers are permitted to bowl 2 overs each and 2 bowlers 1 over each. And those 2 bowlers who bowl in the mandatory power play overs will not be allowed to bowl in that batting power play. So 3 different bowlers have to be used for the 3 different power play overs. Rajesh will be on strike against Rohan Salgaonkar. So field restrictions have eased off. Only 4 fielders inside the inner ring. That's a good shot. No one fielding there. It was short and easy put away here for Rajesh. He purposely placed this pull shot down in the fine leg region as the fielder was there in the deep square. So finding the gap, getting 4 runs. Well, one loose ball here from Rohan, which has been taken for 4 runs, but I don't think so. He'll be consistently bowling such loose deliveries in his over. That's a good ball. Fielder is placed in the extra cover. Are they going for the second run? First day wanted to go. Then there was hesitation from Sapnesh. He says, no, let us not get a run out. We cannot afford a run out at this stage. Single taken in the extra cover. Score moves on to 17. Third over in progress. Match watched by many of the spectators in Curchorem, as is the case every time on this ground. Although it's little bit more humidity and heat out in the middle. This should be wide, way too wide. It was easy signal for umpire. Wonderful innings there from Sid Vanekar and Pritham to get them to a total of 87 runs. And now the bowlers are presenting themselves, getting wickets, 4 wickets in fact in the first 2 overs. Rohan Salgaonkar continuing with his bowling to bowl the second over. Umpire Nilesh Naik and Sadgiri officiating the second semi-finals. That was a loose ball. Full toss ball down on his leg. Great powerful flick from the powerful man Rajesh. Look at that strike. This over has certainly got the momentum back in towards Cowboys' body side. Kitna 24? Huh? 25. Thank you, Nurbhai.
So Rajesh ready to Rohan. That was a good ball, but wide signal. Well, the way I see it, batsman did shuffle across, so it was quite clear and evident from the replay here what I see. Goa Livecast covering this entire tournament right from first day towards the fifth day today in the second semi-finals. This is a good bowling. Wonderful comeback. Bowling the quicker one, not bowling short, in the hitting the good length area. And there is an extra cover also placed for a shot, which is if at all lifted by Rajesh as a cushion for the bowler to bowl outside off stump. This time also it's wide. The ball cut in, ball came back in as an off spinner, but it came way too late. It came afterwards from the bowling crease, or the popping crease you can call, the guideline marked for the umpires. So wonderful piece of batting played with soft hand. Easy going for the second run. Rajesh, oh, chance of an easy run out. Oh, lucky there. Very lucky. If a throw was good straight in the hands of Rohan Salgaonkar, this could have been fifth wicket. Miss an opportunity. First, Rajesh wanted the second. Swapnesh said no. Then they had to go as Rajesh already into the halfway mark. After completion of 3 overs, the score is 29 for the loss of 4. Fourth over, once again, Namdev Banavlikar continuing with his bowling. So both the good bowlers have been told to continue. If they can get 1 or 2 wickets here, then certainly it might be much more difficult for Cowboys by to chase this down. But till the time Rajesh and Swapnesh are there on the wicket, then it's quite possible. Cowboys by is a strong unit, batting also somewhere around 6 to 7. But finally, you cannot rely on the men who are coming back. The batsmen out in the middle right at this time have to do the job. Wonderful ball, and very nicely played in fact by Swapnesh. He knows his job cut out. He cannot give away his wicket. He has to wait for that fourth or fifth bowler option. Not every time that in Panchayat or municipality you have all five good bowlers of the same caliber. Rohan Salgaonkar is definitely one of the top caliber bowlers. Namdev also showing, yes, I am also good with the ball. But do they have that much of depth is a question. That's a wonderful shot. Lucky that he didn't time it well. Otherwise, it could have gone straight in the hands of extra cover region fielder. Nevertheless, a good shot in the offside. So almost a leather ball field that has been set here by on-field captain Poonaji for Namdev.
Swapnesh once again on strike. Once again, not a convincing shot, just an outside edge. But singles, they won't mind getting singles here. At least the scoreboard is moving along. Score moves on to 32. We have seen the capabilities of Rajesh with the bat. He certainly is a good, strong man who can clear these boundaries at ease. But it has to be in his strong hitting zone. And he's clean bowled. That's the reason why Namdev Banalikar was continued, because he wanted a wicket, Punaji, and he gets one. Third wicket here for Namdev, and Rajesh has to go back in the pavilion, inside edge and hitting the leg stump. This time played nicely with the soft hands, but a good wicket taking over. Not only he has given less runs, but also taken important wicket of Rajesh. Score moves on to 33. He goes for the switch hit. Can be one more catch. Difficult one. Yes. Slightly away. Good effort given by the fielder, but it was always going to go out of the reach. He's going for the switch hit at such a difficult time, and the player is placed for the switch hit. Risky shot. Luck going in towards the Swapnesh side, but it won't go if he continuously plays such shots. At halfway mark of the innings, score is 34 runs for the loss of 5 wickets. And 54 runs required of another 24 balls. And since 5 wickets are lost, DHIRAJ 11 ASSONORA are in the driver's seat. If they take 1 or 2 more, then I don't think so. The batting strength will be there with the tail enders to hit those sixes, which is required. Let's see who is coming to bowl the number 5 over. Till then, halfway mark, I will hand over the mic, and let's hear some Hindi from Ashok Naik, sir. थैंक यू डीजे, धन्यवाद हरीश सर। पावर प्ले का इशारा, बैटिंग पावर प्ले का 4 ओवर समाप्त। आधे विकेट वापस, 5वां 5 विकेट, 24 गेंदों का खेल, और जीतने के लिए अभी भी चाहिए 54 रन। 24 बॉल्स 54 रन। सेमीफाइनल का मुकाबला, दूसरा मुकाबला। कड़ी धूप, सूरज माथे पर, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है मैदान में निश्चित रूप से सभी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन देखना होगा सभी की निगाह कि किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है। अब तक की अगर बात की जाए, पगड़ा भारी DHIRAJ 11 ASSONORA क्रिकेट टीम का, लेकिन अगर एकाध दूसरा ओवर 20-22 रनों का मिल जाए
तो मैच में वापस से कर सकते काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। बैटिंग पावर प्ले का ओवर, पहली गेंद पर लाजवाब शॉट, स्कोर आगे बढ़ा 40 पर। छोटी गेंद, मौका बनेगा स्क्वायर लेग पर, फील्डर, और एक सफलता मिलती हुई धीरज 11 असनोडा क्रिकेट टीम को। विकेट नंबर 6 डीजे। थैंक यू डीजे। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट, सिद्ध वेरनेकर और नए बल्लेबाज मैदान पर कविश। 48 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। छोटी गेंद हुक करना चाहते थे, बल्ले से लगी गेंद, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, सिद्ध वेरनेकर लगातार दूसरा विकेट चटकाते हुए। डीजे ट्रिक की गेंद सिद्ध वेरनेकर की। छोटी गेंद, टॉपेज लगा, देखना होगा नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई, सिंगल बना स्कोर में। 47 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। और इस ओवर के बाद खेल बाकी 3 ओवर का। अगर गेंदों की बात की जाए तो मैं कहूंगा अभी भी खेल बाकी है, लेकिन बल्लेबाजी में 7 विकेट वापस आउट होकर डगआउट में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पुल करना चाहते थे मिड विकेट पर, बल्ले का किनारा लिया, इस बार विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। तो हैट्रिक, ओवर हैट्रिक जो कि निश्चित रूप से सिद्ध वेरनेकर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 8वां विकेट वापस निकलता हुआ, अभी भी 2 विकेट हाथों में है और दूर अभी जीत दिखाई देती हुई काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम के सामने। एक अच्छा ओवर, सफल ओवर धीरज 11 असनोडा क्रिकेट टीम के लिए।
गेंदबाजी में सिद्ध वेर्णेकर पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बाद में कमबैक, 3 विकेट चटकाए और एक नए बल्लेबाज कपिल वेलिप मैदान पर। शॉट ऑफ लेन गेंद छोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। खेल इसी के साथ और एक ओवर समाप्त, 5वां ओवर समाप्त हुआ मैच में और 5 ओवर समाप्ति के बाद विकेटें गिर चुकी है टोटल 7 और 5 ओवर समाप्त 7 विकेट और 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 41 रन। डीजे अंतिम जोड़ी मैदान पर। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी, क्या ऑल आउट होगा, क्या ओवर बच जाएंगे, ये सामने वाली बात है मैदान पर। हुक क्या इस बार बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अंतिम जोड़ी 41 रन मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल है, क्या संघर्ष होगा आखिरी जोड़ी का मैदान पर। ऑफ स्टंप पर इस बार खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पुनः जी कलंग उठकर गेंद को कलेक्ट करते। ऑफ साइड पर एक गली पर एक कवर पर फील्डर, एक मिड ऑफ पर एक डीप लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर एक डीप लॉन्ग ऑन, लगभग काउ कॉर्नर पर एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग। ये फील्डिंग की जमावट DHIRAJ 11 अस्सोनोरा एक बिल्कुल मैच में पकड़ मजबूत कर चुकी है। अंतिम जोड़ी संघर्ष कर रही है। रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 6ठा ओवर जारी, 2 ओवर का खेल बाकी। शाम का आखिरी मुकाबला जो टॉस होगा 2:50 और 3 बजे मैच शुरुआत होगी। 5-5 ओवर के 2 इनिंग और दर्शकों के लिए भी इनामें रखी है फाइनल के मैच के दरमियान। फुल टॉस गेंद इस बार अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन बना स्कोर में, थोड़ा सा रनों और गेंदों का बीच का अंतर कम हो गया। 40 रन अभी भी चाहिए मैदान में मैच को जीतने के लिए। 5वां दिन देखते देखते बिल्कुल वो दिन वो घड़ी आ गई सामने फाइनल के मैच की। स्टार बॉयज ऑफ कुर्चोरेम बहुत मेहनत 15-20 दिनों से उनके पूरे सभी साथियों द्वारा इस टूर्नामेंट के लिए 7वां पर्व इस टूर्नामेंट का। बाबूश हो, असलम हो, मंसूर हो, उनके नूर भाई हो,
उनकी पूरी टीम जुड़ चुके हैं टूर्नामेंट के साथ पिछले 15-20 दिनों से। और वो मेहनत, वो काम, बस अब थोड़ी देर में जो कि फाइनल का मुकाबला ठीक 2:50 टॉस और 3 बजे अंतिम मेगा फाइनल इस टूर्नामेंट की। एक और से टीम सावर्डे बॉयज पक्की हो चुकी है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दूसरी टीम आखिरी जोड़ी का संघर्ष हो रहा है मैदान पर, और कहां तक ले जाती है देखना होगा। क्या मुकाबले को जीत दिलाती है आखिरी जोड़ी, ये भी बात होगी। खुद का दूसरा टीम का 7वां ओवर लेकर सिद्ध वेर्नेकर, 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल, 40 रन अंतिम जोड़ी। अच्छा शॉट, बॉलर बैक टू द ड्राइव, मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन मिड ऑफ पर चौकर ने फील्डर रन की संभावना को समाप्त कर दिया। अंतिम 11 गेंदे और 40 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। शॉर्ट पिच बाउंसर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिला स्कोर में, 39 रन, अभी भी 11 गेंदों का खेल। इस ओवर में 2-3 अगर बड़े शॉट लगे तो शायद थोड़ी सी खलबली भी मच जाएगी मैदान में धीरज 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम के खेमे में। फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर, अच्छी किस्मत, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। विकेट कीपर पुनाजी, एक स्लिप, एक गली पर लगभग फील्डर, एक कवर पॉइंट पर, एक मिड ऑफ पर, सर्कल पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक काउ कॉर्नर पर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम के 38 रन अंतिम जोड़ी मैदान पर, खेल जारी 7वें ओवर का। ओ देखना होगा यह मौका, मिड ऑफ पर फील्डर, तो फाइनल में प्रवेश करती हुई धीरज 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम, आपका अभिनंदन। काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम, आपने का सफर भी अच्छा रहा इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने भी खेला इस मैदान पर। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आज फील्डिंग में गलती हो गई, जो कैच छूटे, मैच हाथों से छूटा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से धन्यवाद, आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे जो कि मैन ऑफ द मैच के लिए, इस मैच का मैन ऑफ द मैच। मान्यवर कक्ष में सम्माननीय सर संदीप जी मडगांवकर, उनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच 35 रन बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में 4 विकेट, एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, सिद्ध वेर्नेकर मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच सिद्ध वेर्नेकर, 4 विकेट, 35 रन, और हमारे सम्माननीय सर संदीप मडगांवकर सर, जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी दी जाएगी। तो असलम 3 बजे फाइनल का मैच